ख्याल में तो he is not disqualified on that basis. तो फिर तो it will directly conflict. खत्म हो जाती बात. Because आप जब किसी को perjury के देखिए तो डिक्लेरेशन हो गया ना, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट भी कर दिया. मैं जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी कर दिया. चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ. आर्टिकल 10A उसका जवाब है. वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. आर्टिकल 10A says there will be due process and fair trial. An elementary principle of due process and fair trial is notice of the charge against you. Now when somebody is being tried for perjury, is he under notice that he will also be disqualified on 62(1)(f? Then that sort of kills the whole thing. So, आपके मुताबिक 62(1)(f की डिक्लेरेशन कहाँ से आ रही है? पहले मैं आपको आप just explain that. मैं वो कई स्टेजेस पे कई फॉर्म्स पे आ सकती है. स्टेप नंबर 1 बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन चलते हैं. सबसे पहले आरओ के पास नॉमिनेशन पेपर्स जाएंगे. वो नहीं दे सकता. It's not a court of law. He has to be shown some declaration at that time. From some court of law. By some court of law, and that declaration has to be specific for the purposes of 62(1)(f. वो कहाँ से, मतलब give us an example. मैं चलता हूँ. हम स्टेप बाय स्टेप वो स्टेजेस के थ्रू जाएंगे, शायद मेरी बात क्लियर हो जाएगी. The fact के आरओ नहीं दे सकता has already been held by this court in Aladinos Bhaios case, PLD 2020, Supreme Court 591. अभी वो नोट किया था जी, ठीक है. नेक्स्ट स्टेज, आरओ ने फैसला किया, अब हम इलेक्शन अपील में चले गए. आर्ग्यूबली अब ये प्री इलेक्शन है. आरओ ने ये फैसला किया, इलेक्शन अपील में हम आ गए. अब इलेक्शन अपील अंडर सेक्शन 63 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कंप्राइज जनरली of sitting judges of the High Court. So they are judges, but then acting as persona designata. So arguably, if they have admitted facts before them, they have admissions, or they have undisputed facts before them, then they can make this declaration. At best would be regarding the fact that yes, there was a mistake in filling the form. That's the message. There can be something more than that. Something more than that. For example, an objection is filed that this gentleman has already been convicted for perjury. That's an objection taken before the election tribunal. Convicted. So that is when the election tribunal, if it is a court of law, can arguably make that determination that whether this conviction for perjury actually attracts. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. याद देखें, ये बात आपकी बिल्कुल आप कॉन्ट्रडिक्ट अपने आप को कर रहे हैं. या तो आप कहें कि परजुरी का डिक्लेरेशन आ गया, कन्विक्शन आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया, इन दैट लाइन ऑफ रीजनिंग कि ये कन्विक्शन परजुरी का हो गया. फिर कोर्ट के पास कोई चारा नहीं, वो कहेगा तुम ये डिक्लेरेशन है, यूर आउट. फिर कोर्ट बैठ के करेगा क्या? या तो आप ये आर्ग्यूमेंट लीजिए, या आप उसके बरक्स आर्ग्यूमेंट लीजिए कि वो was in the context of giving false evidence in a particular case which will have no bearing with regard to an election matter. You can't have a mix and match. ऐसे अच्छा एक जज बैठ के कहेगा हाँ ये तो हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा जज कहेगा नहीं हुआ डिस्क्वालिफिकेशन. ये जो आपने सेकंड पॉइंट किया है, that is exactly my point. कि जो कन्विक्शन है for perjury, that itself is not decisive. वो तो कानून शहादत के नीचे भी decisive नहीं है. आपका कहना है, फिर तो आप कहिए ना कि समीउल्लाह बलोच is wrong. Samiullah Baloch doesn't deal with this issue. That's my point. The Samiullah Baloch doesn't deal with the issue of how, in what proceedings, by which forum will this declaration be given. That's correct. ना कह रहे हैं wrong है. मैं ये कह रहा हूँ it is deficient. नहीं देखे ना ये. That's why I'm saying it is deficient because it does not deal with this critical issue. That creates a problem. Samiullah Baloch says that disqualification is for life because of this very declaration by a court of law, and yet it does not deal with the fact that where is this declaration actually coming from. Yes. So it is very important to understand because various councils are given a different viewpoint on this. Is it that when the nomination papers are filed, the RO will sit there, but somebody is going to produce a declaration from a court saying that this person is not sagacious, or will the RO start determining that question? So if it is to come from outside, some other court, फिर किसी court की declaration ये specific होगी ना that this person is not honest. Now I don't know of any declaration that can be possible under 42 which would say that he's not honest. तो मुझे ये पहले तो ये this conundrum तो solve ही नहीं हो रहा ना कि declaration आएगी कहाँ से? ये 42 की declaration है. अच्छा मैं एक और चीज कहता हूँ. मैं कहता हूँ declaration as envisaged under 62(1)(f cannot be legally passed. Hang on. Now hear me out. First word in 62(1)(f is it can never be passed.
Now please chew over this concept. Sagacious. Which court of law can ever determine this? It cannot be passed. A declaration to the contrary. We are not the क्या कहते हैं जो Spanish Inquisition के जो courts से. No court, unless you tell me yes, a court can pass such a declaration of sagacity. Can a court pass a declaration of righteousness? Can a court pass a declaration of non-profligateness, honesty, and Amin? You cannot pass these declarations. I give you a tangible example, even that you can't handle. I say, what about perjury, conviction of perjury? Which court? You said a court of law, a court of law. So I am now a civil judge and I say, you are not sagacious, Mr. Uzair Bhandari, because you misled me in that case. You cited a judgment of the High Court which was overruled by the Supreme Court. You are not an honest lawyer. Is that a declaration? So I am saying these are just words on a piece of paper which are utterly meaningless. What would you say to that? My lord, I'm just proposing this, not holding it, mind you. My lord, actually, if your lord, since I am in that happy position that I mentioned, I agree with your lordship. These are not enforceable standards. These are given in the constitution. So the problem we're facing. So as my lord, as a citizen and as somebody who knows something about politics and constitution, for me these are completely amorphous, subjective, vague concepts which are not judicially enforceable. But we have to give some meaning to Mr. them. Uzair, It's a wish list. It's a wish list. It's a wish list. Mr. Uzair, we could go along with If that. your lordship says that, then that takes care of all the problems. Mr. Uzair, These are not enforceable Mr. Uzair, we standards. could take this to be a wish list and this could be used by the electorate for whatever subjective analysis whenever they want to. But the point is we cannot attribute redundancy to the constitution either. Yes. So that's the problem. We have to figure out what does this mean. So first of all, it is very clear to all of us now that there can be no declaration saying you're not sagacious. There can be. अब वो बताए ना. मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ वो आप मुझे अगर sequentially चलने दें, that's how अच्छा मुझे I have perceived अच्छा आपको हमने एंगेज किया किसी ने कि यार ये मेरा मुखालिफ है, ठीक है, इसको डिस्क्वालीफाई करो. अब आप सूट बनाएंगे, क्या बनाएंगे जिसमें कहेंगे ये सजेशियस नहीं है, जरा बना दीजिए मुझे और प्रेयर मांग लीजिए उधर. My lord, मैं क्योंकि ये नेगेटिव डिक्लेरेशन है, ये कैसे मांगेंगे प्रेयर? मैं प्लेन ड्राफ्ट करना तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रूव करना मुश्किल है. नहीं बताया ना, मुझे ड्राफ्ट कर दे. मैं मुझसे तो ड्राफ्ट भी नहीं होगा. My lord, as I said, जब डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा था ना, we'll jump off that bridge when someone pays me for it, I'll think about it. Nobody has paid me to think about जुडिशियल it. मैकेनिज्म क्या होगा ये बताया ना. क्योंकि समीउल्लाह केस में अगर आप पैरा 35 देखें, आखिरी 4 लाइनें लिखी हुई हैं. द जुडिशियल मैकेनिज्म इन आर्टिकल 62(1)(f) of the Constitution grants a fair opportunity and adequate remedy for relief to a candidate under challenge to vindicate himself. What is the judicial mechanism? वो नहीं दिया समीउल्लाह बलोच में. इसमें लिखा है, समीउल्लाह से पढ़ रहा हूँ मैं. नहीं दिया उन्होंने नहीं वो ये specify नहीं किया. कह रहे नहीं दिया. वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा जुडिशियल मैकेनिज्म दिया हुआ है इसके अंदर to vindicate the honor of that person. Yes. तो what is the judicial mechanism? वो मल्टीपल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी, वो मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं. वो कैसे प्ले आउट करेंगे मैं वो बता रहा हूँ. पहली बात, जैसे मैंने कहा कि जी आप इलेक्शन प्रोसेस देख लेना जी, एंड टू एंड कहां पे ये चीज हो सकती है. आरओ के पास नहीं हो सकती. अगर कोई प्रायर डिक्लेरेशन नहीं है तो आरओ खुद ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं. आप रिपीट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना बता दें, आरओ के पास भी पेश तो हो सकती है ना कोई डिक्लेरेशन. आप हमें बताएं डिक्लेरेशन आएगी कहां से. माय लॉर्ड, वो डिक्लेरेशन कहां से आएगी? आर्टिकल 199 में. 199 में, एक सेकेंड, 199 में you're only there to declare an act of a public functionary to be correct or incorrect or wrong, or right? How could you go ahead and declare a private person to be non-sagacious in 199? My lord, why can't I file a writ of quo warranto against somebody holding a public office that he is not entitled to? Fair enough. So he doesn't have the qualifications. Fine. चलो उसने कह दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, को वारंटो में cannot hold this seat. Does that mean he's not sagacious? No, but I can then, the High Court can grant that
declaration. Where from, how, कहीं लिखा नहीं, उन्होंने तो सिर्फ सेट डिक्लेयर करना है कि ऑर्डर ठीक है गलत। नहीं, बट अगर उसमें डिटर्मिनेशन ये होती है कि वो इसलिए ये उजैर साहब दुनिया उजैर साहब वो honest नहीं है, आप ये बारीकी फिर कैसे? Well, every time we pass an order in quo warranto, we must also go ahead and say this guy is not honest. मतलब आप को वारंटो में या किसी भी पिटीशन आपने में quo warranto कहा तो इसलिए मैं